Welcome to this episode on Mahabaleshwar, the queen of hill station located in Satara district in Maharashtra on our channel Jessy and Globe. Once the summer capital of Bombay during the British Empire, Mahabaleshwar is famous for its rivers, temples, waterfalls, evergreen dense forests, majestic peaks and valleys. It is filled with winding roads, strawberry farms, and the weather condition is pleasant all year round. Both Panchgani and Mahabaleshwar has a rich, deep history. From ancient temples and historical sites to colonial architecture, it offers something for everyone. Whether you are a history buff or a nature lover, you are simply going to love it. So what are you waiting for? Book your stay today and experience the beauty and history of this stunning destination in Mahabaleshwar. The most important thing is choosing the right location to stay. There are many options available. Some are located in isolated, secluded places, whereas others are located in crowded, noisy places. So we found this Arya resort which was at an ideal spot, very convenient and not too crowded. The stay here was comfortable, the staff were polite and cooperative. We truly enjoyed the stay here. The other thing that I want to tell you in this episode is about the best way to explore this hill station. There are some tips and tricks to explore this city. The best way to do is to hire the local tour guide, the local taxi service. If you have your own vehicle, leave it at your hotel and use the local tour guide. They will show you around. They know all the shortcuts and the best way to explore the hill station. The first place we went is the Lingmala Waterfall. The waterfall is divided into two parts, the lower part and the upper part, and here we are at the lower part of the waterfall. The spot is ideal to swim and splash around. It is surrounded by rocky mountain and abundance of lush greenery all around. Absolutely mesmerizing place. Here we are at Venna Lake, which is a man-made lake built in 1842 by the ruler of Satara, Shri Appa Saheb Maharaja, a descendant of Chhatrapati Shivaji Maharaj. He built it to ensure regular water supply to nearby towns. The tour guide showed us the water distribution system. He explained everything to us. It is spread over 28 acres and this lake still caters to the water demands of the nearby town. It has a couple of pilgrimage spots to submerged in a 1 or 2 kilometer radius. One of the most scenic places. This boat ride took us around 30 to 40 minutes. The best thing about this lake is that it is surrounded by mangrove trees. Really beautiful. The air is so pure and clean.
The tour guide explained us the vegetation type, the type of plantations that is usually found here. Here we are at the sunrise point, Wilson Point. It is a splendid spot to spend some quality time with your family and friends. There are 3 watchtowers with observation deck that offer spectacular 360-degree view of the entire city. This is one of the observation deck. You can also enjoy horse ride too here. Even in Venna Lake, you can enjoy horse riding. Here we are off to visit Lamington Point and King's Chair. The place involves trekking 600 meters. The entire path goes through forest and rocks. At the beginning of this trek, there is a Ganesh Mandir, a Swayambhu Mandir. It is unique because it is one of the few temples in the country in which the presiding deity faces west to guard the Western Ghats. This is where we have reached at the top. This is the spot called as the Plateau Point. It offers a scintillating view of surrounding green area, acres and acres of evergreen forest. This is the King's Chair. It's a small plateau in the midst of green woods. It is believed that Chhatrapati Shivaji Maharaj used to come and sit on this chair. Mahabaleshwar is synonymous with strawberries, and Mapro Garden is the famous strawberry plantation. It is also a major tourist attraction. You can try their famous strawberry ice cream and other products such as jams, marmalades, syrup. They even host the famous strawberry festival in the month of March to April.
Mahabaleshwar is dotted with beautiful, stunning viewpoints. They go by different name, and all of it they offer stunning view of lush greenery all across. Next stop is Krishnabai Temple, one of the hidden gems of Mahabaleshwar, built in the year 1888, located on a hilltop overlooking Krishna Valley. It is believed to be the source of Krishna River, a small stream of river flowing from a Gomukh cow face falls in a kund or water tank, which is the source of the mighty river Krishna. It showcases an ancient architectural style incorporating black stone and lime without using mortar, using the technique of mortise and tenon joint. The structure is held together by external forces that allow a certain degree of relative displacement and deformation between the connecting members. Building something like this requires fine craftsmanship to make precise cutting. Beautiful artwork and carving. There is no nail or iron or mortar used in the construction of this temple. Simply fascinating. This is the cow-faced Gomukh that is spouting out the Krishna River. A sacred pilgrimage site. सभी का नहीं जाने का, यहाँ से पहला पॉइंट स्टार्ट होता है। हंटिंग पॉइंट इसका नाम है। हंटिंग मतलब ब्रिटिश लोग शिकार करने के लिए बैठता था, यहाँ पर जगह था। इसके बीच में नदी जाता, तुमने मंदिर देखा होगा ओल्ड महाबलेश्वर, इसके अंदर से नदियाँ जाती है। दो नदियाँ कोंकण मिलत का जो बॉम्बे का अरबी समंदर है, ये समंदर को जाके मिलते हैं। नदी का नीचे छोटा झरना है, झरने का नाम है टाइगर किंग। अच्छा, इसके पर जो जानवर पानी पीते जब जाता था, अंग्रेज का भी इधर शिकार करता था। और सामने वाला कुत्ता पड़े शिवाजी महाराज का चला।
एक पॉइंट है जो आवाज मारेगा ना 3 सेकंड के बाद पानी को टकरा गया पर्वतों से आगे में टकरा गया सामने वाला पर्वतों से अपने सेकंड की वापस एको पॉइंट व्हाट इज वो देखना पड़ता है रोड के बाजू में पॉइंट आ जाता है सावित्री ये पत्थर दिखा क्या सारा पॉइंट अशका एक आवाज मार के दिखाते हैं आपको आगे आइए कैसा सेकंड खामोश रहेंगे तो शांति रखो तो आएगा एफर्ट वेस्ट चला गाने हमारा मैं 5 के दिखाते देखो हाँ हाँ देखो भाई आया एक हल्का सा आया अब इनका ही है हाँ यस इट इज कमिंग अरे बीच में बोलते थे उधर आवाज मार थोड़ा नीचे झुक के करो उन्होंने नीचे झुक के किया वापस आवाज आती आ जाइए वियर्ड साउंड आएंगे बाद में अरे सब लोग चिल्लाता है इजीली नहीं आ रहा है दिस इज इको पॉइंट सी ओके We are on our way to go to the Arthur Seat Point. Along the way, we have covered Tiger Spring Point, Hunters Point, Echo Point, Window Point, Malcolm Point. Arthur Seat offers enchanting views of the Sahyadri River on the left and dense forest of Brahma Aranya on the right. Legend has it that Arthur Mallet used to sit here and stare at the Sahyadri River for hours, mourning the loss of his beloved wife and daughter who had drowned in the river. You have to climb down a step of stairs to reach the Arthur's Seat. नाम है टाइगर स्प्रिंग है सर हाँ पानी पीने के लिए मजा आएगा झरना इधर पब्लिक अच्छा उधर झरना है कंटिन्यू 12 महीने चलता है पानी सब जानवर पानी पीने के लिए निकलता है शेर चीता हरिन संबर सुअर जंगली भैंसा इधर पानी पीने जब भी निकलता है समझ आपको पीना है पानी पीछा देखो तुम्हारी मर्जी पर है तुम्हारी मर्जी पर है पानी पीने का नहीं चलेगा तो टाइगर स्प्रिंग पॉइंट टाइगर स्प्रिंग पॉइंट इज हियर मम्मी पापा ऊपर ही चल ना लिखा है ओ व्यू पॉइंट उसकी फैमिली डूब गया था उन्हें पत्थर का जगह पाने के इसके पास बैठ के कुछ लिखता था इसी कारण इसका नाम है आर्थर सीट ये 3 डिस्ट्रिक्ट का अंदर जगह पूना डिस्ट्रिक्ट सतारा डिस्ट्रिक्ट कोंकण बोला रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में अप्रैल मई महीने के अंदर हवा चलते हैं ना ये एयर प्रेशर चलता है हल्का चीज कौन सा भी छोटा को लेकर ढक्कन 10 पैसा कौन सा भी हल्का चीज नीचे रहे हवे से ऊपर आ जाता है रुमाल के 4 कोनों पर 4 पत्थर बन के नीचे रहे यदि चीज ऐसा पर आ जाता है ठीक है
अभी देखो यहाँ तक हम लोग का डेमो राइड है, यहाँ तक आना या फिर यहाँ से रिटर्न जाना हम लोग का कोई चार्ज या तो कोई पैसा नहीं। इधर से अंदर विजिट करने के लिए हम लोग के 4 पैकेज है। जस्ट 2 पैकेजेस में हम लोग का हॉर्स सिर्फ मैदान में राइडिंग करता है, जिसको स्लो फास्ट भगाना है, दौड़ाना है, राइडिंग करना है, बच्चों लोगों का एक्टिविटीज़ होता है। अभी आप लोग राइडिंग वगैरह तो नहीं करेंगे। जो कोई पॉइंट्स देखने के लिए आ रहे हैं, सारे पॉइंट्स हम लोग के अंदर है। जो हॉर्स जा रहे हैं ना अंदर, वो घोड़े से लेकर राइट साइड में जितना भी ओपन डिस्टेंस टेबल एंड है, उतना ही डबल डिस्टेंस आपको सामने और लेफ्ट साइड जाना पड़ता है। जो लास्ट साइड में छोटे छोटे घोड़े की उस तरफ, तो अभी अंदर नहीं एंड तो उसका और बहुत आगे है। हाँ, तो अभी यहाँ इधर से आगे पॉइंट्स के लिए हम लोग के 2 पैकेजेस है, एक स्मॉल टूर और एक बिग टूर है। जैसे स्मॉल टूर करते हैं 2.5 से 3 किलोमीटर का राइड है, उसके अंदर आपको देखने के लिए 4 पॉइंट्स होते हैं। जैसे महाभारत में जो 5 पांडव होते हैं, हज़ारों साल पुराना उनका पैरों का फुटमार्क्स है। सेकंड में 1 ट्री पॉइंट आता है, पूरा टेबल लैंड प्लेटू के ऊपर एक ही ट्री रहेगा। टेबल लैंड छोड़ के साइड सीन वैली में जहाँ पर आप लोगों का गाड़ी या तो मेरा हॉर्स नहीं जाता, वैसे एक पॉइंट आता है पैराशूट पैराग्लाइडिंग वाला पॉइंट, जहाँ से हैंड ग्लाइडिंग पैराग्लाइडिंग किया जाता है। और एक लेक आता है, आर्टिफिशियल लेक, ऑन द स्पॉट लेक के तरफ लेके जाते हैं। जैसे अभी गणेश विसर्जन, दुर्गा विसर्जन किया जाता है, ऐसा 4 पॉइंट्स के लिए जाते हैं। 2.5 से 3 किलोमीटर का राइड है। सपोज बड़ा वाला राइड करते हैं, उसमें हम लोग का पॉइंट इंक्लूड होता है ज़मीन के नीचे अंडरग्राउंड 2 केव्स, टाइगर केव्स और पांडव केव्स। केव्स देखने के लिए आपको घोड़े से उतर के ज़मीन के नीचे जाना है। अंदर जाएंगे, रेस्टोरेंट, गार्डन, कैफे वगैरह बनाए। केव्स देखने के बाद इतना नॉर्मल सन का हीट लग रहा है, उससे कहीं ज़्यादा धूप नहीं, इसी जैसा ठंडा रहेगा। अंदर 5-10 मिनट आपको बाहर आने का दिल नहीं करेंगे, इतना बढ़िया केव्स है। केव्स देखने के बाद अंदर टेबल लैंड का मेन अट्रैक्शन पड़ता है शूटिंग स्पॉट, जितना बेस्ट एंगल रहता है, जंपिंग, ट्रिक, टाइटैनिक। हम लोग के गाइड लोग आपको पूरा फोटोग्राफी कराएंगे। वहाँ से आपका दोनों लोकेशन कवर होता है, जैसे कि ओल्ड पंचगनी, न्यू पंचगनी, तारे ज़मीन वाला स्कूल, गदर मूवी वाला स्कूल, दो रिवर का मीट, शिवाजी महाराज का इनकम्प्लीट फोर्ट, कमल फोर्ट और राजा हिंदुस्तानी वाला पालनखेत गाँव। तो अभी आप लोग डिसाइड करो आपको कौन सा पैकेज करना रहता है। 4 पॉइंट्स करना है, 9 पॉइंट्स करना है, जस्ट मैदान में राइडिंग करना है। ये 6.5 किलोमीटर का टेबल टॉप है। हाँ, अपना घोड़ा बोलेंगे तो 3.5-4 किलोमीटर घूमता है उसके बीच में। चले ये बीच वाला क्या एक काम चालू है मैडम, घोड़े के ट्रैक का। जो घोड़ा बारिश के मौसम में यहाँ पे विजिट होंगे ना आप, तो घोड़ा कंपल्सरी बंद किया जाता है यहाँ पे। ये सब वेस्टर्न घाट्स में आता है, सबसे ज़्यादा बारिश यहाँ पे होती है। हाँ, ऐसे सामने को फॉग बन जाता है कि ऐसे सामने कुछ दिखाई नहीं देता, तभी जो गेस्ट आता है घूमने के लिए, तभी वो वॉकिंग के लिए बनाया हुआ है। अभी देखो, आपने महाभारत सुना है क्या? महाभारत सुना है आपने? उसमें देखो 5 भाई लोग थे, 5 पांडव, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर। जब वो जुए में हारे थे तभी 13 साल का वनवास और 1 साल का गुप्ताज्ञातवास हुआ था उनको। तभी वो लोग 1 साल छुपने के लिए यहाँ पे आए थे। जब 13 साल का वनवास खत्म हो जाता है तो 1 साल छुपना पड़ता है। अगर किसी ने मुंह देख लिया तो वापस 13 साल वनवास के लिए जाना पड़ता है। तभी गुप्ताज्ञातवास के समय वो लोग यहाँ पे आए थे छुपने के लिए। आगे पांडव के वे उस गुफा में वो लोग छुपे थे 1 साल। यहाँ पे वही आप 5 पांडव के फुटमार्क्स देखने के लिए मिलेंगे आपको। यहाँ पे कैसा था, पहले टेम्पल वगैरह था ओल्ड वाला, यहाँ का टेम्पल वगैरह तोड़ा गया है। कैसे टेम्पल बांधते हैं, फुल वाला आता है, हर वाला आता है। ये टूरिस्ट प्लेस है, हिल स्टेशन है। बाद में फिर इसका कुछ वैल्यू नहीं बचता करके आपका टेम्पल वगैरह हटवा दिया। 5 पांडव के फुटमार्क से। इसका सेम कॉपी बोलेंगे आप तो नासिक में आता है, देखो पंचवटी में टेम्पल के अंदर। गुजरात में जाते हैं तो सौराष्ट्र, MP में जाएंगे तो पंचमढ़ी में। सेम कॉपी तो आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर आप दशहरे में यहाँ पे आते तो यहाँ पे इसका पूजन वगैरह किया जाता है। और ऐसे फुटमार्क एक जगह पे नहीं, पूरा टेबल लैंड के ऊपर है। ये टेबल लैंड बोलेंगे तो ओल्केनो से बना हुआ है। इसके नीचे पूरा ऐसा पत्थर देखने के लिए मिलेगा 6.5 किलोमीटर का 1 पीस। ये जो मिट्टी दिखाई देती है ना ऊपर वाली, 1-1.5 फीट मिट्टी है। जो ब्रिटिश लोग थे इंडिया में, घोड़ों के ऊपर यहाँ पे पोलो गेम खेला जाता था। घोड़ों के पाँव में नाल रहता है मेटल का, जो स्लिप होता है करके यहाँ पे मिट्टी डाली है 1-1.5 फीट। मेरे टेबल लैंड पत्थर का बना है, तो इसके ऊपर पेड़ पौधों कुछ प्लांट करेंगे ना आप तो कुछ आता नहीं। लेकिन सामने देखो एक पेड़ दिखाई देगा, पूरे 6.5 किलोमीटर के टेबल टॉप के ऊपर एक ही पेड़ दिखाई देगा आपको। ये बाकी के बोलेंगे तो वैली से आए हुए हैं नीचे से, और 2 पत्थर को तोड़ के आए, गॉड गिफ्ट है वो। सामने प्लेन पहाड़ी दिखाई दी है क्या, बीच में गाड़ियाँ लगी है। ये साइड सीन वाला अपना पॉइंट आता है हैरिसन फॉली पैराग्लाइडिंग पॉइंट। हाँ, जो हवा में पैराग्लाइडिंग चलता है ना, सब उस पहाड़ी से किया जाता है। देखो, जो हैरिसन नाम का ब्रिटिश था उसने फर्स्ट टाइम चालू किया था, वहाँ से वो फॉलो किया, वो इसलिए नाम दिया हुआ है हैरिसन फॉली। मैं इस बार भी जो पहाड़ी है उसके ऊपर टावर लगा है ना बड़ा वाला, इसे सिडनी पॉइंट बोला जाता है। सिडनी बोलेंगे तो देखो ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल था पहले सिडनी। हम जो स्ट्रॉबेरी मलबेरी खाते हैं ना,
एक्चुअली इंडियन नहीं, ऑस्ट्रेलियन है। 1850 में जो लोग आए थे सिडनी से, उन्होंने फर्स्ट टाइम वहाँ पे प्लांटिंग किया था स्ट्रॉबेरी का, और वो प्लांट सक्सेस हुआ, इसलिए उनकी यादगार में उसे सिडनी हिल्स का नाम दिया है। Here we are at Tableland, Asia's second largest mountain plateau spread across 95 acres of volcanic laterite rocks and dense vegetation. We enjoyed jaw-dropping views, flora, horse riding, trekking, paragliding, or just gazing at the stunning view of the hill station. This is a tiger cave and we just halted here. Here we are at Sydney Point. It offers a charming view of the Krishna Valley, Dhoom Dam, Kamalgarh Fort and city of Vai. It is located in Panchgani. There's a small wobbly wooden bridge that you have to cross and reach at the end to view the stunning valley. All in all, Mahabaleshwar is an eclectic, vibrant place filled with nature sites, full of traditional flavors seeped in history. A must-visit place.